How are you doing, guys? Fine, All sir. well? Yeah, all Good good. evening, sir. I'm fine. How are you? Good, I'm good. Thank you. So we have a lot of people missing. Dheeraj is there. No, Abhishek is there. Gaurav is there. Praveen Sir. is there. Ajay. Ajay is there, yeah. Shiva is there. Sandeep is there. Krishna Kumar Gautam is there. Pritu Singh. Pritu Singh is there. Umar Farooq. Is this you? UF 00786, Umar? I think he just left. Tamanna is there. Jia. Jia is missing, right? Hmm. But anyway, so we will start with a new topic today. So the non-technical guys, raise your hands, please. Nobody? They might don't know how to do it. How to raise? Anand, yeah, Anand is there. Tamanna is there, yeah. Two people only, right? So Bipul, Anand, Tamanna, three people, right? And Prito. Okay. So any idea about how website works? No, sir. Okay. Everybody knows what is internet, right? Sir. Yes, sir. How website works. Any idea about domain and hosting? Mm. No, sir. No, sir. Anybody has any idea? Sandeep, you have any idea? Yeah, yes, baby. Okay. What is it? Sandeep. Okay, I guess my voice is give me a minute. My voice is like a bit. Domain means what we can say the URLs or the name of the website what we can type over the internet. Right. Yeah, Web address. like Basically the web google.com address. or any website name. Right. Yeah. And hosting? And Hosting means like a domain hosting means increasing that or make it like
over the internet. So yeah, correct. You are correct. So let me make it simple to so the people from non-technical background they will understand how internet works. So we can access some servers. What are servers? Super configured computers, right? The servers, they are configured with some superior powers, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So what is server? Let's say I'm working on this system, and if I make this system as a server, what I need to do, I need to make it connected all the time through the internet, and there will be a certain address. So what is the address for the computers? That IP address. IP address. Yeah. So with the IP address, we can access the computers, right? So if I make this system as a server, what I need to do, I need to provide my IP address to everybody. It has to be public and it has to be connected with the internet. Right? Okay. And people around the world who can access the internet, they can access my system, right? Clear है? Server सबको? Yes, sir. किसको नहीं है? हेलो? किसको नहीं है? Anybody? Hello? Nobody, yeah? So clear to everybody. So servers, you can say it's a CPU, superior with the superior powers, well configured. Ritu saying no sound. You cannot hear me, Ritu? Everybody can hear me? Yes, Yes, sir. sir. We can hear you. hear you, sir. Yes, ठीक है. Uh, Ritu is not able to hear me. Let me ask. Maybe her connection is weak. Probably, yes. Can you hear us, Ritu? No reply. Hello, Pritu. I left a message. Let's see if she can reply. She says no. Okay. Can you please check your sound? Internet connection is good. She can see my screen, right? Ritu Singh left. Maybe she's rejoining. She has joined. Can you hear us now, Pritu?
He says no. So please check your sound setting, yeah. Okay, anyway, let's resume, okay? So as I told you, just imagine the server looks like this, mostly looks like this, or a server room looks like this. Everybody can see my screen, right? Yes, sir. So what are these? Some configurations, hard disks, superior CPU with the superior powers and everything, right? Yes, sir. Configured and connected all the time with the internet, right? No, do not join with the mobile, Anand. Please avoid joining with the mobile, okay? No, sir. I've joined with my laptop. I'm telling Okay, you Preeto to suggested join earlier. with her mobile, sir. Because At least they can hear us, okay? I got it. okay, sir. So if you see this image, server which is connected with the internet and clients, you can access it with the different devices, whatever the device is connected to the internet, right? Correct, everybody? Yes, sir. Okay. So now how website works? So we take a space within this server, okay? A hard disk space. So let's say we took 2 GB space from this server, okay? Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. रिप्लाई करते रहो आप लोग Okay, Okay, sir. sir. जी बिल्कुल सर. वर्चुअल क्लास में है ना हम लोग तो रिप्लाई आप लोग करते रहोगे पार्टिसिपेशन रहेगा समझ में आएगा ठीक है और कुछ नहीं Okay, समझ sir. में आया आप वो भी बताते रहो Okay, sir. Yes, sir. ठीक है वॉइस इंटरप्शन हो रहा है क्या देयर इज अ कंस्ट्रक्शन वन गोइंग अराउंड मी so is it disrupting too much No, sir. There noise is no noise. okay that's good ठीक है so what we do let's say we take a space 2 GB 10 GB whatever some gigabyte space in this server ठीक है and how do we build the website we create some files right we code into those files and we put all those files into this hard disk ठीक है So, now the server provider the company we provides this service we call hosting okay so they will provide an specific IP address to access those files ठीक है Okay. है ना अभी yes, sir. हमने इस सर्वर में 2 GB 10 GB 50 GB जो भी है स्पेस लिया ठीक है अपनी फाइल्स बनाई जिसमें सर भी आपकी HTML है वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ा. सबको ब्रेक हो रही है No, sir. नहीं No, sir. No, sir. No, sir. We are hearing you clearly. okay Gaurav need to check your internet connection Ritu is it fixed can you hear Okay, sir. us join from mobile unable to hear anything how comes he is unable to hear anything from the mobile as well anyway so okay where were we were talking about the hosting provider okay so hosting provider will provide you an IP address where you can access those files ठीक है Yes. Okay. आपने 2 GB 5 GB 10 GB स्पेस लिया आपने प्रोग्रामिंग बनाई कुछ फाइल्स बनाई
फाइलों को कोड किया, आप HTML है, .php, .asp है, या फिर कोई और एक्सटेंशन है, ठीक है। आपने उन सारी फाइलों को सर्वर पे रखा, ठीक है। अब है कि उन फाइलों को एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे एक्सेस करेंगे वो फाइलें एग्जीक्यूट हो जाएंगी और हम उसका आउटपुट देख सकेंगे, राइट। Yes. So how do we access those files? They will provide us some specific IP address, right? एक certain address. Manager, Yes. mute yourself if you are not talking. आप कुछ अगर नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर लो, ठीक है। Okay, sir. हाँ। So you can access all those files with some certain IP addresses. Now, IP addresses are not easy to remember, right? Sir. Yes, sir. So what is the solution? The domain, the name, some fancy name, or maybe you say, some beautiful names, which is easy to remember. So you need to get a domain as well, okay? You can get the domains from the different domain provider, such as GoDaddy, Hostinger, and other services, right? So GoDaddy, Hostinger, and there are other services who provides the domain. You need to buy the domain, and once you got the domain, ठीक है, आपने जो भी डोमेन खरीदा, ये आपका डोमेन होगा, राइट। सर टाइटल Yes, और sir. डोमेन में अंतर क्या डिफरेंट? टाइटल पेज का टाइटल है, डोमेन डोमेन है, ओके ओके सर। ठीक है। तो आपने एक डोमेन खरीदा, अब क्या करना है, इस डोमेन को हमने जो सर्वर या फिर होस्टिंग खरीदा है उसकी आईपी से मैप करनी है। हाउ डू वी मैप द आईपी एंड द डोमेन? विद द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हेलो, सर बिल्कुल, यस सर। सो व्हाट इज डीएनएस? एनीबॉडी? Don't Domain know, name. sir. What was that? Domain name. Domain name server, sir. System, domain name system, Oh, Yeah. system. ठीक है, domain name system. So through with the help of DNS we map the domain name and the IP address, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो डोमेन नेम है, आप जब इस डोमेन नेम को हिट करोगे तो जो इससे रिलेटेड जो आईपी हमने मैप की है इस डोमेन को, वो हिट होगी। जब वो आईपी हिट होगी तो स्पेसिफिक सर्वर के स्पेसिफिक स्पेस को हिट करेगी, राइट, और वहां से फाइलें एक्सेस करेगी थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। एंड उस हार्ड डिस्क में जो फाइल्स रखी हुई है जो एग्जीक्यूट होंगी उसका जो आउटपुट होगा वो हम यहाँ पे देख सकेंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाउ वेबसाइट वर्क्स, सर एवरीबॉडी? डीएनएस का यूज समझ नहीं आया एक बार। डीएनएस के थ्रू हम डोमेन नेम और आईपी को मैप करते हैं, ओके मैपिंग करते हैं, ठीक है। ओके। सबको समझ में आ गया है? यस Yes, सर। sir. एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो सर। सर केवल रिपीट करो प्लीज। विच पार्ट? DNS use. Okay, DNS. So let me go through it again.
We got a space on the server. That part is clear. Yeah, sir. We coded some file and uploaded those files on the server. That part is clear. Okay. Yes, Yes, How sir. do we access those files? With the help of IP address. Okay. IP addresses are not easy to remember. So what do? We get some domain name, right? right. Okay. Yes, sir. So let's say we got a domain something, bipinprasad.com. So when we hit bipinprasad.com, तो अभी कैसे पता चलेगा कि bipinprasad.com को अगर हम हिट करेंगे तो कौन सी फाइल एक्सेस करेगा? वो स्पेसिफिक उस आईपी की फाइल एक्सेस करे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस डोमेन को उस आईपी से मैप करते हैं थ्रू द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डीएनएस का पार्ट क्या है कि डोमेन और आईपी को मैप करने के काम में आता है। Okay. ठीक है, अभी क्लियर है? Yes, sir. अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये गोडेडी का डैशबोर्ड। ठीक है, हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. and we have some domains. So let's say we have some domains. We have some domains and we have some hosting. And how hosting does look? This one. ठीक है, if you click on the manage, you can make some different configurations through the hosting. ठीक है, through the cpanel access and और भी अलग अलग पैनल्स है। ठीक है, cpanel है क्लिक बेस पे। ठीक है, हमें कोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है एक इंटरफेस में, आप क्लिक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो वी गॉट दिस स्पेस। ठीक है, and we got some files. Now we have a domain. This one says bipinprasad.com. ठीक है, हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now once you get into this cpanel, so this is a hosting. ठीक है, once you get into the cpanels, you can say there is a IP address. ठीक है, Okay. Yes, sir. now once you go to the DNS configuration of this domain says bipinprasad.com, you see there are A records updated with the same IP address, right? Yes, sir. So this is the DNS configuration. So हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो डोमेन है और ये जो होस्टिंग है, इस होस्टिंग की आईपी को लिया। आईपी एड्रेस के थ्रू हम इस होस्टिंग को एक्सेस कर सकते हैं, इसके फाइल्स को। ठीक है, और इस आईपी को डीएनएस में जाके हमने ए रिकॉर्ड में वो आईपी अपडेट कर दी। ठीक है, Okay. अभी सर क्या ये हुआ, सर ये जो आप डोमेन लिए सर, ये फ्री डोमेन एंड होस्टिंग का प्रो है सर, ये प्लेटफॉर्म। क्या चीज? सर ये डोमेन सर आपको डैडी से मतलब ये जो विपिन प्रसाद आप क्रिएट कर रहे हैं, ये हाँ, मतलब ये सर फ्री है कि सर ये मतलब कि अभी आपने मतलब मैं समझ नहीं पाया मतलब कि ये कैसे ये आपने। लिया हुआ है। अभी अभी आप फ्री लो पेड लो डजेंट मैटर। ठीक है, मैं यस प्रोसेस बता रहा हूँ, ओके सर। मैं बता रहा हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं। ये सर नहीं, वो आपने पहले बताया ना सर कि मतलब वो मतलब हो पहले जो है वेबसाइट मतलब परचेज करनी पड़ती है मतलब जो है। हाँ हाँ, वो परचेस करनी पड़ती है तो डिफरेंट पार्ट हो गया। मैं बता रहा हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं। आप चाहे आप अपनी गाड़ी चलाओ,
क्या दोस्त की मांग के चलाओ, क्या रेंट करके चलाओ, है ना? ओके सर। Right, sir. तो ऐसे, so we have this domain and we have this hosting. In this hosting, we have this IP address, and we connect this IP address with by updating the DNS record, a record, and we provide the same IP address. Now this domain is connected with this hosting. So जब भी हम इस domain को hit करेंगे, इस hosting के, अब यहाँ domain manager में हमें उस domain को पार करना पड़ता है और एक path लेना पड़ता है, इस path में वो एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये पाथ है हमारा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल। तो जब भी हम हिट करेंगे, इस फोल्डर को एक्सेस करेगा और इस फोल्डर में जो भी फाइलें हैं उन फाइलों को वो एक्सेस करेगा। ठीक है, यस सर। तो सिंपल सिंपल वर्ड में समझ में आ गया इंटरनेट से वेबसाइट कैसे काम करता है, यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी? No, sir. इजी है समझना सबके लिए? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। नॉन टेक्निकल बंदे, तमन्ना? हेलो तमन्ना। Anyway, you are outside today as well? Vipul? हेलो विपुल, यस सर। समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल आया। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, और कौन है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से? आनंद। आनंद ऑलरेडी नोज दिस थिंग्स, या? तमन्ना, Ritu, she cannot hear us. Something wrong is going with her. Who else? और कौन है? और कोई नहीं है, right? So nobody has any questions, right? Right, sir. Yes, sir. यस सर। Are we, Sandeep and Shiva, are we good today? Yeah, we are good. ठीक लग रहा है, easy लग रहा है? Yes, sir. Sir, instead of this paid, we can use GitHub. It's like a free domain user. You can use free domain, paid domain, whatever you can use, you know? Okay. Yeah, I'm just trying to explain the Explain the process. process. Yeah, so this is the Yes. process. Whether you use free domain, gifted domain, paid domain, you know, anything. You build your own servers, you build your own domain, anything. चलो ठीक है। Little bit you got it. Gaurav says maybe. Tamanna, you cannot understand properly. Which what you could not understand? Gaurav, Yes, sir. what is maybe? सर प्रॉपर समझ में नहीं आया ये। तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना कि क्या नहीं आया आया, आप पूछो मुझसे। बोलो क्या पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया?
सर डीएनएस है, ये हमें यूज में करता है आईपी और डोमेन का जो मैप है, डोमेन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। चलो मैं और इजी बताता हूँ। कंप्यूटर्स आप सब कुछ समझते हो, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम। यस सर। ठीक है। आपके कंप्यूटर को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकता हूँ मैं? आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट? राइट। यस सर। और हर कंप्यूटर का एक एक एड्रेस होता है, राइट? राइट। यस सर। ठीक है गौरव, हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपका एक एड्रेस है, आपके कंप्यूटर का भी एक एड्रेस है। ठीक है, ठीक है। और वो एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। ठीक है गौरव। यस सर। कैसे चेक करोगे आपका आईपी एड्रेस? बहुत सारी वेबसाइटें हैं। आईपी चिकन है, चेक माई आईपी है। आईपी चिकन पे जाओगे, आपकी आईपी दिखेगी ये। ठीक जी है। सर। यस सर। हाँ, चेक माई आईपी लिखोगे गूगल में, आपको डायरेक्टली आईपी दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है। यस सर। Preetu says, sir, I have tried with the both browser connection as well as mobile hotspot, still no luck. Is there any way I can get the recording for this session? Of course, I will get the recording, but live sessions are important, isn't it? ठीक है गौरव, ये समझ में आ गया ये पार्ट? आपके सिस्टम को कैसे एक्सेस करेंगे? यस एक सर। आईपी से। ठीक है। अब बात यह है सर्वर क्या है। तो सर्वर कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है, आप बहुत सारी मूवियों में देखे होंगे, या फिर ऐसे जो इमेजेस हैं ये सारे सर्वर्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मॉनिटर छोड़ के जो सीपीयू वाला पार्ट है वो है, इसमें प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, राइट? यस सर। ठीक है। और सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन में है, बहुत ज्यादा हैवी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। और ये तो ये हमेशा सर्व तो ये हाँ, सर्वर हम फेस टू फेस देख सकते हैं क्या? फेस टू फेस अभी किसी सर्वर रूम में आप जाओगे तो देखोगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, उसका सर्वर रूम होगा, तो वहाँ पे आप करोगे। आपके कॉलेजेस में रहे होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं अपने सर्वर्स। ओके। ठीक है। तो ये सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं और ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। अब क्या है, जो कंपनी ये कॉन्फ़िगरेशन बना के रखी है और हमेशा इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इस सर्वर को दे रही है, वो आपको इस सिस्टम में कुछ स्पेस के बदले कुछ मंथली चार्ज करती है कि आप 10 GB स्पेस ले लो और महीने का कुछ पैसा देना। ठीक है। तो इससे क्या है, आप उस सर्वर में जो भी फाइल रखोगे, आप थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां पर भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आप इस सर्वर के उस स्पेस को एक्सेस कर सकते हो। उस स्पेस को कैसे एक्सेस करते हैं? आईपी एड्रेस से। क्लियर है गौरव? यस सर। हाँ। और वेबसाइट कैसे होता है? वेबसाइट में हम कुछ फाइल्स बनाते हैं डिफरेंट एक्सटेंशंस के साथ। उन फाइलों को उस सर्वर पे, उस स्पेस पे रख देते हैं और उसको उस आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं। अभी क्या है, जो मेरा डोमेन था bipinprasad.com, उसकी एक स्पेसिफिक आईपी है, तो किसी को बताना थोड़ा सा टफ है। मान लो मैं बता दिया, बट दैट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर।
तो उसको फैंसी करने के लिए हम वो डोमेन लेते हैं bipinprasad.com और उसको उस आईपी से मैप करते हैं। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में जाके उस आईपी को मैप करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी bipinprasad.com एक्सेस करोगे मीन्स आप उस आईपी को एक्सेस करोगे, और जब आप उस आईपी को एक्सेस करोगे मीन्स आप उस सर्वर में रखी हुई फाइल्स को एक्सेस करोगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और इस तरह से आप जब भी कोई डोमेन हिट करते हो, कोई भी वेबसाइट हिट करते हो, तो आपको वेबसाइट दिखती है। क्लियर है सबको? यस। किसको नहीं है? किसको क्लियर नहीं है? एनीबॉडी? ओके, नोबॉडी। Subulakshmi Panda, clear everything? Yes, sir. Umar Faruqi, Yes, sir. Clear, sir. Sandeep, are we good? So this side, Yes. Subbalakshmi, do we have any group in Slack account? Like any common group? Yeah, this one. All the Okay. notifications and everything you will get from here. Okay. Could you please let me in this group? You are there. But actually in my account I can't able to like see any kind of group. You need to figure it out, but you are there. Uh, what's the name Maybe of so Subulakshmi Panda 143@gmail.com. this one? Okay, Yeah. okay. It is wrong mail ID actually. That's the reason I can't able to find. Okay, so you need to talk to the management to correct your email ID. Okay, okay, sure. I will do that. So Okay, thank you, sir. others are there on the Slack channel. यस सर। Yes, sir, we are there. So moving ahead, that was the how website works. Okay. Now in websites there are two type of scripts. Okay. Give me a moment. Okay. So there are two types of scripts. Who is good with the HTML? Who did the project with the HTML? Library Management System, Abhishek Mathur, right? Sir. Abhishek Mathur is here. Yes, sir. Okay, you tell me, what are those types of scripts? So there are two types of scripts, server-side scripts and Client side. client-side scripts. So what are the server-side scripts and what are the client-side scripts, Abhishek? The server side scripting code which runs on the server, and client side scripting the codes that run on client's device. Okay. So So PHP is used for server side scripting, and JavaScript is used for client side scripting. client-side script. Okay. So basically there are two types of scripts. One which runs on the server, okay, and which runs on the server is server-side scripts, and another one is the client-side script, which runs basically in the user's browser. Okay, it's a browser-based script. And what are those scripts, Abhishek? Client-side scripts apart from JavaScript?
Sorry, sir, I don't remember any other scripting language. HTML, CSS and JavaScript. ठीक है? Okay, sir. So HTML, CSS and JavaScript runs in user's browser. So to run classic JavaScript, HTML and CSS, you don't need any server. You can directly run it to any browser. Clear है सबको? यस सर। और इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसको बोलेंगे सर? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसको बोलेंगे? ये अभिषेक बताएंगे। किसने पूछा ये? इरफान बोल रहे सर। Irfan, BSc IT. You know the HTML, CSS, JS and Bootstrap, right? यस सर। So you tell me what ये are the स्क्रिप्टिंग scripting? लैंग्वेज एंड बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। So अच्छा, you tell me what was the name? Abhishek Mato. A difference can be like a programming language does not, one means scripting language are used to write the logics for web browsers, and programming languages are used to write logics for like applications like games and other offline applications. So basically MVP और OOPS जो फॉलो करता है उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो प्लेन क्लासिक लैंग्वेज होती है जिसमें आपको MVP और OOPS की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये NBP क्या है सर? ये I also didn't get that MVP. What is this NVP? हेलो सर। Anybody? हेलो संदीप सर, एम आई बताओ। ऑडिबल? हाँ सर मैंने पूछा सर ये NBP क्या है सर? ये हाँ हाँ बता रहा हूँ। संदीप हेलो। Sorry, Bipin. Yeah, I don't have idea. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, Object MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, okay. Model view controller, MVC. MVC, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, MP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और मॉडल व्यू कंट्रोलर या फिर रूप्स को जो फॉलो करता है उसको हम MVC कहते हैं। एंड स्क्रिप्टिंग ऐसे प्लेन होता है। क्या? हेलो। Yeah, okay, okay. और oops क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सर। Sir, Object object oriented and program. classes के concept based. ठीक है? So HTML, CSS, JavaScript, those are the client-side scripts which directly runs into the user browser. Now HTML, CSS and JavaScript, they are important because आप वेबसाइट चाहे किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, आपका जो आउटपुट आएगा वो HTML, CSS और JavaScript के कॉम्बिनेशन में ही आएगा, राइट? राइट सर। तो ये Yes, sir. इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली तो आप यूजर्स को यही दिखा रहे हो ना। अभी ये फ्लिपकार्ट किसी एक लैंग्वेज में बनी है, लेकिन जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो क्या है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। JavaScript।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। एनीबॉडी? So what is HTML, CSS, and JavaScript? So with the HTML, we build the skeleton of a web page. With the help of CSS, we beautify the web page. And with the help of JavaScript, we interact with the web page. ठीक है? यस सर। Clear है सबको? So with the HTML, we build the skeleton of the web page, and with the CSS, we beautify the website. You know, all the colors, background, other appearances. You know, these borders, icons, all those things we adjust with the CSS. And JavaScript, we interact with the website with the JavaScript. So let's say this is a slider moving left to right. Okay, you click here, it will move to right. You click here, it will move to left. And that happens with the JavaScript. And JavaScript works with the events, right? What are the events? We click here, that's an event. We key press, mouse click, mouse over, there are certain events. ठीक है? सर सर एक क्वेश्चन। हम्म। एक वेबसाइट को बनाने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज का यूज होता है, राइट? अगर राइट फ्लिपकार्ट ही है, इसमें अगर यूज हुई है, मान लीजिए जावा यूज हुई है, तो ओनली सारी ये वेबसाइट जावा में बनी होगी, राइट? ठीक है, बनी होगी। एंड इसमें और भी लैंग्वेज हुई है, राइट? पीएचपी, पाइथन, ये लैंग्वेज यूज होती है इनमें? हाँ, तो आप जावा जानते हो, आप सी प्लस प्लस जानते हो, एसक्यूएल जानते हो, राइट? सो आप राइट। अगर पीएचपी में बना रहे हो तो पीएचपी में बनेगी, अगर जावा में बना रहे हो जावा में बनेगी, डॉटनेट में बनाओ, रिएक्ट में बनाओ, और डिफरेंट। अगर हम इन सभी को यूज करें तो अगर ऐसी ऐसी वेबसाइट बनती है कुछ, ये सभी को जरूरत पड़ सकती है उन वेबसाइटों में? होती है, लेकिन अभी साइट के डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करा सकते हैं, है ना? सो बैक एंड पार्ट, हाँ, बैक एंड पार्ट को हम डिफरेंट यूज में ले सकते हैं, लेकिन सभी लैंग्वेजेस नहीं यूज होते, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी है ना, जैसे आप मान लो डॉटनेट और पीएचपी दोनों को यूज करोगे, सो एक विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म का है, एक लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म का है, राइट? तो जो आप होस्टिंग लोगे, आप तो कोई एक ओएस की होस्टिंग लोगे ना, या तो विंडोज बेस्ड लोगे या तो लिनक्स बेस्ड लोगे। तो अगर आप लिनक्स बेस्ड ले रहे हो तो लिनक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कराओगे, और अगर आपको डॉट नेट पे बनानी है तो फिर आप विंडोज बेस्ड लोगे। आइडियली तो यही होता है, और भी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं अगर हमको लिनक्स पे ही डॉट नेट चलानी है या फिर विंडोज पे पीएचपी चलानी है, तो उसके भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, बट आइडियली ऐसा होता है, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। So how is it so far? Easy to understand or difficult? Yeah, easy to understand. Okay, everybody? Anybody has any question, any doubt so far? Nobody? ठीक है। So a quick recap. हमने प्रोसेस समझा, इंटरनेट और वेबसाइट कैसे काम करती है, डोमेन होस्टिंग क्या है, सर्वर क्या है, डीएनएस क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, राइट?
Yes, sir. So now we narrow down our topic. So we start with the HTML. ठीक है? Now what is HTML? How to configure domain name and server. What does that mean, Ajay? You configure the domain name, there are certain configurations through the DNS, and server, there are certain ways to configure the servers. Few servers are based, AWS platform. Yeah, with DNS, we configure the domains, and server configuration are different, So अगर AWS पे है तो उसकी configuration अलग है, Windows पे है अलग configuration है, Linux based है अलग configuration है, cPanel based है अलग configuration, WHM panel है अलग configuration है, right? ओके सर। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवऑप्स का बंदा है उसको सब पता है, ठीक है? आपको प्रोसेस जानना है कैसे काम करता है, ठीक है? So we narrow down our topic and we come to this point, what is HTML, ठीक है? ओके So आज कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं कराऊंगा मैं, एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द HTML, ठीक है? What is HTML? There is a difference, definition, hypertext markup language. और ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, you can read and it's very easy, ठीक है? Hello? ओके सर Okay, Now, okay. now there is a milestone, how HTML started and what is it. And as I told you, HTML is the skeleton, CSS is the screen, JavaScript is the, it's just example. So with the help of HTML, we build the skeleton of the website. With the help of CSS, we beautify the website, and with the JavaScript, we interact the website. We interact with the website. Clear है? ये 3 lines. यस सर। Yes, sir. हाँ. ओके सर A moment. So that's the HTML's JavaScript. Okay. Now, editor, IDE. So as I told you guys, whatever you prefer, you can use your own preferred IDE. ठीक है? The people from non-technical background and who never used any IDE, you can search for Visual Studio Code. Okay, with the Google, you go to the download section and you download the IDE based on your operating system. Okay, I will leave this link. Okay. So I left the link. Okay. You download the IDE, install it, and it will look like this. Clear? Yes. Now moving ahead. A web page. Basic structure of a web page. What is the basic structure of a web page? So if you see this website, so the website basic structure at least has a header section and a footer section and this body section. Okay. So header and footers, those are common on all the pages. So let's say we are on this home page. So we can see the same menu bar, यस right? सर We are on this docs page. We can see the same menu bar, update page.
we can see the same menu bar, right? So this part is common on all the pages, right? Content part is changing frequently. Yes, sir. ठीक है? And so the footer is, footer is again mostly not. That's a format. The footer will be common on all the pages. ठीक है? Sometimes footers are different, but mostly those are common on all the pages. Clear है? Header footer, Yes, sir. everybody. Anyone has any doubt? Any questions so far? अभी कुछ डाउट है तो आप पूछो. नेक्स्ट नो वीक मत सर. पूछना. भी मान लो नेक्स्ट वीक मत पूछना. 10 दिन बाद मत पूछना कि सर हाँ फर्स्ट क्लास में ना ये डाउट था. फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? सर विदाउट एचटीएमएल वेबसाइट नहीं बना सकते क्या? अल्टीमेटली तो HTML ही रेंडर करेगा. जी. यहाँ पे आप जो देख रहे हो एप्लीकेशन सर? क्या एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन. नहीं नहीं, वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये एचटीएमएल का यूज उसमें भी होता है क्या सर? नो नो, होता है, उसमें नहीं होता. एंड्रॉइड की बात होता है. कर रही है. एंड्रॉइड में XML यूज होता हाँ, लेकिन HTML भी यूज होता है वेब एप्स में. अगर हाइब्रिड ऐप बना रहे हो जी. उसमें होता है ना. है. वेब एप्लीकेशन तो हम्म. Like React Native, correct? लाइक रिएक्ट नेटिव. लेकिन रिएक्ट नेटिव से अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो तो अगर वेब रिलेटेड है तो अल्टीमेटली तो HTML CSS का ही रेंडर होगा ना. दिखेगा तो वही सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है वही दिखेगी ना. नहीं समझे? No, got it, got it. हाँ. सो हम क्या बात कर रहे थे? हेडर एंड फुटर. ठीक है. So web structure, that's the basic structure. Now there is a advanced structure. So this one is the advanced structure. This part is header. Okay. Header consists the title, subtitle. Then we have the menu. On the sidebar, we have the main section, which is article, which consists the content, basically content. The images, videos, text, all those things, forms, right? Then we get the footer part. ठीक है? यहाँ तक clear है यस सर. सबको? यस सर. सर. Now, how do we create an HTML file? So we will open the editor, we go to the file, new file or new text file, and we save this file wherever you want. ठीक है? जहां आपको ठीक लगे. ठीक है? So and we name it we name the file. ठीक है? So let's say HTML basic. ठीक है? So the name can be anything. You just name it. ठीक है? What is the most important thing? The extension. You need to provide the extension. And what is the extension for the HTML? .html. .html. So dot we provide .html. ठीक है? Hello. Yes, sir. And we save the file. The moment we save the file, a file has been created here.
html_basic.html. ठीक है? Yes, Yes, sir. And you can directly open it in any browser. ठीक है? okay. So currently So, we opened in Chrome. ठीक है? Hello. ठीक है sir. Now, whatever you write here, you know, anything will be rendered in the page. So you go to the page, you refresh it, and you see the text. ठीक है? Yes, sir. Clear to everybody? Any question, any doubt so far? No, sir. Anybody has any question, any doubt? No, sir. Now, HTML tags comes. ठीक है? How to save file? Ajay asks how to save file. So you save here. ठीक है? Whatever your shortcut key, you save the file. Control S. Control S, whatever the shortcut key. ठीक है? Ajay, clear? Yes, sir. You save the file anywhere. We have saved here, and you can open it directly in browser. So you right click on the file and you open it in a browser. Once you open it, it will look like this, a blank page. Clear? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? No, sir. Anybody has any doubt, any question? You can ask me. I'm coming to that, Shiva. ठीक है? Now, what comes? HTML tags. So what are the HTML tags? These are the tags. Opening tag and closing tag. Closing. ठीक है? And what consists with the opening tag? Less than, then tag name, and the greater than. ठीक है? And closing tag, we have the same, having the backslash. Clear है सबको? Yes, sir. Tag क्या होता है? Clear है? Yes, sir. Now, few people will let me know. Abhishek Mato, what is the difference between tag and element? Are they same? I don't have any clear idea about this. Sir, tag is some which you showed earlier, and element is tag and some matter between them. Right, some content between them, right? Yes, sir. So let's say if you have this p tag and if you have some content, let's say hello world. So this together everything is element, right? And what is tag? This element has p tag, opening tag, and p closing tag. Clear? Eh? Yes, sir. Difference between tags and the elements? Yes. Any doubt, any questions so far from anybody? No. No, sir. Okay. And what are attributes? Anybody? Attributes are like a special, we can say special entities
which we add in any like a tag or any element. For example, like if you want to give any like a class or ID to any tag or attribute. That's an Sorry, element. element, yeah. So So that's attribute is some additional information of tags. Right. Characteristics, C says characteristics, yeah. Characteristics or additional information, definitely. Okay. Tamanna says repeat, please. Okay. So Tamanna, we were talking about HTML tags. Okay. So whatever we write in this space, we will write, I just write it to show you to display the output. Okay. But we will write whatever we write within, we will write within the tags. And what are these tags? So let's say this is the HTML tag, opening tag and the closing tag. Opening tag starts with the less than tag name and the greater than, and closing tag has the same format having backslash. And whatever we write within these tags. Clear? Tamanna? Tamanna? क्लियर है? सर मैं ये बोल रही हूँ जो हम ऊपर और नीचे लिख रहे हैं वो ओपनिंग का टैग है और क्लोजिंग टैग है, जो हम Right. बीच में लिखते हैं वो कंटेंट है, Content. राइट सर? यही ठीक है? है? Yes, yes. ओके सर. ठीक है? And what is the difference between tag and element? So this combination, the whole combination is an element. An element consists with the opening tag and the closing tag. ठीक है? So once we have the opening tag and closing tag having some content within it, the whole together we call it elements. Clear है? तमन्ना? सर ये कंप्लीट हम इवेंट बोलते हैं इसको, मतलब क्लोजिंग टैग कंटेंट और ओपनिंग है जिसमें Elements. ओके ओके. HTML element. An element consists of the opening tag, a character, the content, and the closing tag. ओके सर. ठीक है? और इवेंट्स किसको बोलते हैं? इवेंट्स तो जावास्क्रिप्ट में आएगा आपका. इवेंट्स हो गया जैसे आप कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है? अब वो इवेंट क्या होता है? जैसे मान लो आपने ये क्लिक किया, माउस क्लिक किया, या आपने मान लो कुछ टाइप किया, तो जैसे टी टाइप किया, तो टी टाइप में आपका दो इवेंट होता है. एक की प्रेस, राइट? आप की प्रेस कर रहे हो तो टी टाइप हो रहा है ना. Yes, ठीक sir. है? और एक तीन इवेंट होता है एक्चुअली. दूसरा होता है की रिलीज. तो आपने प्रेस किया फिर आपने रिलीज किया, राइट? यस सर. और एक हो गया की डाउन की अप. आपने की डाउन किया और की अप हो गया. तो चार इवेंट फायर हुए. मतलब हम जो भी एक्टिविटी करें वो इवेंट है. इवेंट है. ओके सर. ठीक है? सो इवेंट जावास्क्रिप्ट में अभी हम एलिमेंट को समझ रहे हैं. क्लियर है? गुड. एलिमेंट्स. यस सर, क्लियर है. ठीक है? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? सो एट्रीब्यूट्स are, you know, as Shiva says, you can say characteristics, some definition. So attributes कैसे होता है? ऐसे. ठीक है? So let's say this is the whole is an element having opening tag and closing tag. We write attribute within the opening tag as the attribute name and the attribute value. ठीक है? So earlier attributes were predefined. पहले क्या था कि प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स थे, हम वही यूज करते थे. बट नाउ डेज इन HTML5 वी कैन डिफाइन आवर ओन एट्रीब्यूट एज वेल. ठीक है? हम अपना एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर है?
ओके सर। यस सर। Yes. इन चीजों को हम थोड़ा डिटेल्स में भी समझेंगे इन कमिंग क्लासेस, ठीक है। सो अभी तक जो भी हुआ, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Anybody has any doubt? Anybody? Nobody. Now, it's time to talk about some tags. So tags में हम क्या करेंगे, HTML में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली कि HTML में क्या क्या टैग्स हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं HTML में डिफरेंट टैग्स के साथ, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और हर टैग का एक डिफॉल्ट बिहेवियर समझेंगे कि बाय डिफॉल्ट उस टैग का क्या बिहेवियर है, ठीक है, Yes, बहुत sir. इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। Yes, sir. So once, how do we create a file? We go to the file, new text file, you name the file, don't forget to mention the extension .html. HTML has to be there, otherwise it will not render the text, ठीक है। Now once you have created the file, the next you start coding, and we start the first tag, we start with the HTML, ठीक है। हेलो, यस सर। तो हमने एक HTML एक्सटेंशन की फाइल बनाई और हमने HTMल टैग स्टार्ट कर दिया, तो हमने वेब पेज को बता दिया कि हाँ अब जो है यहाँ से HTML शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, करेक्ट। यस सर। नाउ Correct. HTML has two sections, one is head and one is body, क्लियर है। सो ये बेसिक फॉर्मेट है, एकदम बेसिक। आप HTML टैग स्टार्ट करोगे, एंड करोगे, उसमें हेड स्टार्ट करोगे, एंड करोगे, बॉडी स्टार्ट करोगे और एंड करोगे। So HTML opening closing, head opening closing, body opening closing. Head and body will be within HTML. Clear? यस सर। Now whatever we write within the body tag will be rendered in the document, the page. इस पेज में वो दिखेगा जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ओके। सो HTML टैग क्लियर हो गया, बॉडी क्लियर हो गया। यस सर। Now it's about the head. So head has different सर roles. HTML टैग लिखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। बिल्कुल, ये एकदम बेसिक, ये तीन चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है। HTML लिखोगे, उसके अंदर हेड लिखोगे और बॉडी लिखोगे, ये तीन चीज नहीं, आप एटलीस्ट लिखो, मैं कह रहा ठीक HTML है। टैग नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ओहो। देयर इज अ करेक्ट वे, ठीक है, देयर इज अ करेक्ट वे। अभी आप मुझसे सीख रहे हो कि बिरयानी कैसे बनानी है, और आप बोलोगे सर मैं कच्चे चावल खा लूं, कच्चा चिकन खा लूं, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, खा लो, है ना। व्हाट्स योर पर्पस, आपको तो प्रोसेस सीखना है ना, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, क्या नहीं दिक्कत सर, है वो बात की। ये हेड का बॉडी में दिखा तो HTML में नहीं सब लिखा जा रहा है, तो मुझे लगा इसका कोई काम नहीं। नहीं, सबका काम है, और जी। बहुत इम्पोर्टेंट, हर टैक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और ओके। सबका ही काम है। जिसका काम नहीं है वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। So we will start with the HTML. Within the HTML, we write head and body. Whatever we write within the body will be rendered in the page, ठीक है। Now with the head, so this is the parent tag HTML. Within this is the child tag, body is another child tag, ठीक है। Within head we write title,
ठीक है. Title is another tag. What is the purpose of title? So you see here we see HTML underscore basic dot HTML, right? Yes, sir. इस टैब में. Yes, sir. Now we write here HTML basics. ठीक है. Within the title, under the head, we write HTML basics. Now whatever we write here will be displayed here. So you refresh the page. It's now HTML basics. Clear है title tag? Yes. Everybody? ये सर क्लियर है. सर हमने HTML में चेंज किया तो वो डायरेक्ट वहां पे चेंज हो गया. नहीं, हमने HTML में नहीं चेंज किया. HTML जो टैग है, इससे हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि हाँ भाई HTML स्टार्ट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ है ना. जी सर. अब हेड में हम बता रहे हैं कि भाई ये सेक्शन हेड के लिए है और ये सेक्शन बॉडी के लिए है. यस सर. ये इंफॉर्मेशन हम दिए. ठीक है. अब हेड के अंदर हमने टाइटल टैग यूज किया. टाइटल से हम क्या कर सकते हैं? ये टाइटल चेंज कर सकते हैं. ये टैब में जो टाइटल दिख रहा है. ओके सर. क्लियर है? सर तो फिर हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड जो आपके ऊपर टैग चल रहा है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं. कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं, ये नहीं सर, दूसरा. कौन अभी सा? देखो वीडियो स्टूडियो कोड लिखा हुआ है ना. हाँ, तो इन्होंने लिखा है ना, ये तो एक वेबसाइट है जो हमने ओपन किया है. अब जी आप सर. इसका पेज सोर्स देखोगे तो इन्होंने टाइटल में ये चीज लिखी हुई है. नाउ वी नीड टू फाइंड द टाइटल टैग. सो हेड, ये HTML स्टार्ट किया इन्होंने, ये हेड है, और विद इन द हेड वी फाइंड द टाइटल. यहाँ पे टाइटल है. यस. यस सर है. विजुअल स्टूडियो कोड, code जी सर. editing and redefined. You hover here, you see the full phrase. Visual Studio Code, code editing, redefined. सर हम इसे परमानेंटली चेंज कर सकते हैं? उसकी साइट पे आप कैसे चेंज कर दोगे यार? हम उसका कर तो रहा था. उसकी फाइल का एक्सेस चाहिए ना. यस सर. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक सबको? सर वो एक्सेस आईपी एड्रेस से मिलेगा. हाँ, उसकी आईपी एड्रेस पे, उसके सी पैनल पे, या फिर जहाँ उसने जिस सर्वर पे उसने फाइल्स रखी है वहां से मिलेगा ना. ओके सर. ये सर तो तो हम उसके घर. उनका आईपी इजीली नहीं ले सकते हैं ना, किसी का भी आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस क्या है? आपके घर का एड्रेस अगर मैं जान गया तो आपके घर तक पहुंच सकता हूँ, आपके घर के अंदर थोड़ी पहुंच सकता हूँ. आपका तो आपके दरवाजे की चाबी चाहिए ना मुझे अंदर पहुंचने के लिए. जी सर. वो सिक्योरिटी तो है. आपके एड्रेस से मैं आपके घर तक पहुंच सकता हूँ, है ना. घर के अंदर तो नहीं पहुंच सकता ना. जी सर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. यस सर, क्लियर है. अब बॉडी के अंदर देयर आर हेडिंग टैग्स. So before heading tags, how do we comment in HTML? Less than, exclamation mark, two time dash, and again two time dash, and greater than. ठीक है. ये हो गया हमारा कमेंट. अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ये पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा. ये कमेंट हो गया. ठीक है. ओके. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर. ये सर क्लियर है. वैसे कमेंट करते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द हेडिंग टैग. वी हम कमेंट को डॉक्यूमेंटेशन यूज करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं. प्रोग्रामिंग में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. Yes, sir. So heading text starts here, and
copy this heading tag and share. So what are the heading tags? H1, H1. H2, H1 to H6. H1 to H6. Who said? Sir, Anand Tripathi. Anand Tripathi. आनंद त्रिपाठी, कहाँ हो आप? यस आपका सर। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ? यस सर, निकल गया सर मैं ऊपर। ऊपर यस निकल सर। गए? यस सर, बस मैं आ ही रहा हूँ आई सर। नो। सर स्क्रॉल कीजिए सर। यस सर। हाँ ठीक है, बेसिक HTML CSS आपको पता है, ठीक है। सो हेडिंग टैग्स का क्या पर्पस है? विद द हेडिंग टैग हम हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। We write this and the output look like this, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे हेडिंग्स यूज तो हुई हैं, ये है शायद हेडिंग में, ये H1 में है, ठीक है। यस सर। सो हेडिंग टैग, कितने टाइप्स के हेडिंग टैग्स हैं? 6। स्टार्ट फ्रॉम H1 to H6. Heading H2, this one is H1, and it goes up to H6. So H3, this is heading, a heading or an heading, a heading, right? सर ये क्या होता है और क्यों नीड पड़ती है इसकी? बता रहा हूं मैं, इससे हम हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग्स क्या होता है? थोड़ा फॉन्ट में साइज में बड़ा होगा और बोल्ड होगा, ठीक है। समझना? ओके सर। हाँ, ये अभी डिफरेंट टैक्स से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 टाइप के हेडिंग टैग्स होती हैं। स्टार्टेड फ्रॉम H1 to H6. So H1 is the bigger one and H6 is the smallest one, है ना। 6 हेडिंग्स है, 6 के अलग अलग डिफरेंट साइजेस हैं, राइट। ओके सर, अंडरस्टूड। सबको क्लियर है? यस सर। ये आपको सब जगह मिल जाएगा कि हेडिंग टैग क्या होता है। 6 टाइप के हेडिंग टैग होते हैं, H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। नाउ who is the most proficient with the HTML? Umar Farooq and library management system Abhishek Mahato, isn't Yes, it? sir. Yes, sir. Okay, you Hello, tell sir. me. You tell me what is the default behavior of heading tag? डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है H1 का? ये सबसे बड़ा है, राइट। ये सब बड़ा, उसके बाद एस टू छोटा, उसके बाद एस से छोटा और सबसे अभी छोटा एस। चलो ये बड़ा है, कितना बड़ा है? अच्छा, पिक्सल का साइज बताए? हम्म, एनीबॉडी? फुल साइज है ये तो, H1। फुल साइज? 32 फुल साइज पिक्सल। नॉर्मल साइज। अरे हाईलाइट 32 भी हो रहा पिक्सल। है। हु सेड 32 पिक्सल? सर आनंद त्रिपाठी। आनंद त्रिपाठी, राइट। सो 32 पिक्सल। अभी ये बड़ा है, आपको सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कितना बड़ा है ना। तो ये जो साइज है इसकी कुछ स्पेसिफिक साइज तो होगी। इस तरह का हाँ साइज तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फुल साइज क्या होता है? फुल साइज इज द n to the power n, right?
हाँ 10 की पावर n n to the power n, लिमिटलेस। सो इसकी कोई स्पेसिफिक साइज तो है। नाउ डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? सो देखो भाई, HTML CSS में द होल गेम इज द width, ठीक है? ओके सारा गेम क्या है? विड्थ विथ का है। सबको पता है व्हाट इज विथ? यस सर हाइट विथ होती है ना? यस सर, सर ये पता है। तो है नहीं। हाँ, तो सारा गेम विथ का, कि कितना स्पेस कौन सा टैग ले रहा है। ये ले रहा तो क्या है डिफॉल्ट विथ H1 का? बताओ भाई, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सर ये तो नहीं पता। एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो सर। डिफॉल्ट विथ इज द 100%, ठीक है? व्हाट इज द सर डिफॉल्ट विथ? 100% ऑफ ब्राउजर विड्थ। 100% of the parent. So 100% of the parent tag, ओके सर। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये विथ को कैसे देखते हैं? देखो, एक टूल है, आपको क्रोम में, बाकी ब्राउजर में मिल जाएगा। यू क्लिक एनीवेयर इन दिस स्पेस एंड यू विल फाइंड दिस ऑप्शन इंस्पेक्ट, ठीक है? यस सर। तो हमने जो भी HTML लिखा है वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है? हेलो? यस सर सर So what is the parent tag here? सर पेरेंट Body, टैग बॉडी। right? And यस सर। body by default takes the 100% width, यस सर। 100% of the browser. यस सर। So what is the default width? 100%। 100%। 100% of the browser, है ना? यस सर। So भी ये 100% लिया। अभी आपकी स्क्रीन की जो भी साइज है, so my screen size is 1365 resolution है, right? यस सर। So it will adjusted with the 100%. So for my screen, it's a 1365, right? Clear है? यस सर क्लियर है। So once you hover on the body tag, you will see this color changing. The blue part is the width, ठीक है? यस सर। The brown part is the मार्जिन। margin. So what is margin? Margin is some space around the tags. And what is padding? The padding is inside the space inside the tags or So content. padding टैग के बीच का and स्पेस। margin. So padding is a space inside within the tag, है ना? कंटेंट और टैग के बीच। Within the tag, within, and margin is a space between the बिटवीन द। tag. Simple language में clear है? Yes sir. यस सर। Clear everybody? Yes sir, clear. Anybody has any doubts so far? Hello?
No, sir. I No. don't have any. So if you click on this hover, ठीक है, if you hover on this H1 tag, what you see? What you see the blue part from left, extreme left to extreme right, right? Yes, sir. Yes, sir. So कितना width हुआ? 100% of browser. 100%. 100% of the parent tag. Parent tag. Browser name, parent tag. I Yes, sir. wrote it down. 100% of the parent tag. Yes, sir. Now, the brown part is the Margin. Margin. So, having margin, which side? Sir, up, sir, Top and top bottom. and bottom. Top and bottom. ठीक है? Yes, sir. Yes. And no padding. No padding. Default behavior. Clear है सबको? Yes, sir. Yes. And the same goes for Everyone. all the heading tags. यहाँ तक clear है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Clear. अभी हमने जो लिखा, this is heading 1 and this is heading 2. So ये content next line में क्यों आया? यहाँ भी तो space है, यहाँ क्यों नहीं गया? सर क्योंकि सर हेडिंग सर एक ब्लॉक टैग होता है सर, तो ये सर अपने सर पूरी विड्थ लेता है सर ये। हाँ, ये ऑलरेडी 100% विड्थ ले चुका है। Yes, sir. सो और यहाँ पे स्पेस नहीं है। Yes. सो क्योंकि ये पूरा विड्थ ले चुका है, ये नेक्स्ट कंटेंट को, नेक्स्ट टैब को नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया है। क्लियर है? अभी Yes, यहाँ sir. पे आप हॉवर करोगे तो आपको ब्लू पार्ट में पूरी विड्थ दिखेगी, ब्राउन पार्ट में आपको मार्जिन दिखेगा और यहाँ पे ये बॉक्स दिखेगा, राइट? Yes, sir. सो एग्जैक्टली दिखा रहा है ये मार्जिन कितना है टॉप 21.440 0. and this is the bottom margin, no left margin, no right margin, right? Yes, sir. ये width दिखा रहा है आपका 1365 which is my current resolution, the 100% of the browser and 37 is the Height. height. So ये बॉक्स समझ में आ गया? Yes, sir. Box model. बॉर्डर 0 है, पैडिंग 0 है each side. क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. Any doubt, any questions so far? सर मुझे पैडिंग और मार्जिन वाला पोर्शन समझ नहीं आया। मार्जिन अभी आप ये समझ के रखो कि पैडिंग इज अ स्पेस विद इन द टैग, ठीक है? जैसे जैसे अभी मान लो, अभी इसको मैं समझाने जाऊंगा ना तो आपको, और आप इस पे मत ध्यान दो, ठीक है? जो मैं कोट कर रहा हूँ उस पे मत ध्यान दो। मान लो मैंने इस पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, ठीक है ना? यस सो ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है, ये कितना लिया है? जितना इसका फुल विड्थ और हाइट है, राइट? यस सर। अब हम इस पे पैडिंग टॉप से अप्लाई कर रहे हैं, तो टॉप में मान लो हमने 10 पिक्सल दिया। ये जो रेड पार्ट है ये टैग का स्पेस है, राइट? यस सर। आप देख रहे हो ये स्पेस ऊपर से बढ़ रहा है ना? यस अभी सर। पैडिंग हमने बॉटम में दिया, अभी स्पेस बॉटम से बढ़ रहा है, राइट? यस यस सर। अभी मान लो हमने H2 को भी एक कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है? ये ब्लू है। सो ये जो गैप है ये मार्जिन है। अभी मान लो इसको मैं देता हूँ मार्जिन बॉटम, ठीक है? नीचे से मार्जिन अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है? इसकी मार्जिन इंक्रीज करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, ठीक है? तो मार्जिन अगर कुछ नहीं है तो ये है, और मार्जिन हमने चारों साइड दे रहा है, ठीक है? हेलो, यस सर। आप देख रहे हो ये कंटेंट को पुश कर रहा है और ऊपर से भी
ऊपर से खुद को पुश कर रहा है और नीचे कंटेंट को पुश कर रहा है, यस राइट? सर, राइट सर। तो ये मार्जिन क्या है? स्पेस बिटवीन द टैग, है ना? अब ये मान लो H2 का हमने कलर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है? सो ये H2 का स्पेस है और ये H1 का स्पेस है। हम जितना मार्जिन बढ़ा रहे हैं उतना दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। यस सर। सो पैडिंग इज अ स्पेस विद इन द टैग, ठीक है? ओके मार्जिन इज अ स्पेस बिटवीन द टैग। सो दिस टैग एंड दिस टैग, जो ये व्हाइट स्पेस है ये क्या है? मार्जिन। मार्जिन। क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर है। पैडिंग थैंक यू मार्जिन सर। यस सर। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर, यस क्लियर है। सर। ठीक। So 6 types of heading tags started from H1 to H6. H1 is the bigger one and H6 is the smallest one. What is the default behavior? It takes 100% width of the parent tag, having margin top and bottom and with no padding. Clear है? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर जो आपने बॉडी में लिखा है डिफॉल्ट विड्थ 100% ऑफ द ब्राउजर, एंड जो आपने नीचे लिखा हुआ है हेडिंग में विड्थ 100% ऑफ द पेरेंट टैग, ब्राउजर और पेरेंट टैग में क्या डिफरेंस है? बॉडी जो हो गया ये 100%, इट ऑलवेज टेक्स द 100% ऑफ द ब्राउजर। सो ये ब्राउजर, ये जो व्हाइट पार्ट हम देख रहे हैं ये ब्राउजर, ठीक है? अभी हम मेरे स्क्रीन का रिजोल्यूशन है 1365, ठीक है? यस सर। सो बॉडी की विड्थ कितनी हो गई? 1365। 65। हाँ, यहाँ दिख रहा है ना 1365। यस सर। अभी मान लो आपका रिजोल्यूशन है 1024। ओके सर। तो जब आप अपने ब्राउजर में ओपन करोगे इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 1024। सो 100% ऑफ द ब्राउजर, ठीक है? ओके सर। एंड H1 टेक्स 100% ऑफ द पेरेंट टैग। सो यहाँ पे इमीडिएट पेरेंट टैग क्या है? बॉडी। सो बॉडी ने कितना लिया है? 1365। यस सर। सो H1 कितना लगा? 136। 1365। ओके सर। ये कैलकुलेशन है, ठीक है? यस सर। और सर H6 कितना लेगा फिर? वो भी 1365? सेम मैंने सब पे लिख दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है? जी सर। ओके सर। 100% विथ सब लेंगे, मार्जिन टॉप एंड बॉटम रहेगा और पैडिंग नहीं है, लेफ्ट राइट मार्जिन नहीं है, ठीक है? यस सर। नाउ another tag, parent tag starts and parent tag ends. Sorry, paragraph tag. Paragraph tag, how do we write? P. ठीक है? And what is the use? We write some paragraph. ये आता है, ठीक है? What is the default behavior? 100% of the 100%. parent tag. 100% of the parent tag, having margin top and bottom, no left right and no padding. यहाँ पे दिखेगा the blue part is the width, the brown part is the Margin. margin. Clear है? Yes, sir. Now paragraph tag, this is simple, we add paragraphs. Another paragraph, this is another paragraph, ठीक है? Hello. This will come to next line. Why? It also takes 100%. Tamanna says why?
क्योंकि सर इसकी जो विड्थ थी वो उसने कवर कर ली है, उसके कवर कर बाद लिया, कुछ विड्थ नहीं है। उसके बाद उसको और स्पेस नहीं है, इसलिए द कंटेंट पुश टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, यस सर। सर टैग क्लोज भी तो हो रहा है फिर। हाँ क्लोज हो रहा है तो हाँ उतना तब स्पेस तो नेक्स्ट इसने लाइन। ले लिया ना। हाँ हाँ वही। नहीं नहीं, ये किसने पूछा? नहीं सर, गौरव ये सर। गौरव। पहले आपका बैकग्राउंड चेक किया जाए, ये कुछ दिन तो टाइम लगेगा मुझे। अच्छा आप मैकेनिकल लो, ठीक है। अभी आपको ये डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। गौरव समझ रहे हो? ठीक सर। सो हाँ, बी आर टैग से। वी आर टैग वी यूज टू ब्रेक द लाइन। ओके सर। हम बाद में आएंगे उस पर, ठीक है। पहले पैराग्राफ को ठीक से समझ लेते हैं। नाउ पैराग्राफ में एक और प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? व्हाट डू वी कॉल? लॉरेम सर। ना ना, इसका म्यूजिक चला जाए। कोलैप्सिंग व्हाइट स्पेस, ठीक है। हेलो, No idea, sir, about this property. नो आइडिया। चलो भाई, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आप बताओ व्हाट इज कोलैप्सिंग व्हाइट स्पेस? सर हम ही बोले सर, अभी नो आइडिया। अच्छा आप ये बोल, अच्छा आपको पहले ही पता चल गया, हम आपसे पूछेंगे, राइट? चलो, ग्लोबसिन उमर फारूक। यू टेल मी उमर फारूक। बस वो प्रॉपर्टी के नाम से लग रहा सर कि वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाता होगा। किसने बोला ये? सर हम अभिषेक सर, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट अभिषेक, वाला। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एग्जैक्टली। आपको ये चीज पता है, ये आपको हो सकता है टर्म नहीं पता। सो अभिषेक ये बताओ, मान लो मैंने ये लिखा, दिस इज, ठीक है, एंड अनदर, और पैराग्राफ, इसका क्या आउटपुट आएगा? सर अकॉर्डिंग तो सर वही सिंगल लाइन ही आना चाहिए आउटपुट। सिंगल लाइन ही सेम आएगा। लाइन में ही आएगा सर। ऐसा टाइप और कराने के स्पेस, लिए हमको तो प्री इसका टैग को का सर यूज करना पड़ेगा, ऐसा ही टाइप कराने के लिए सर हमको। इसका आउटपुट जो होगा ये सेम सेकेंड आएगा। लाइन। ये जो लाइन है, दिस इज अ अनदर पैराग्राफ, ठीक है, ये सेम आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो व्हाइट स्पेसेस हैं, ये एक से ज्यादा अगर व्हाइट स्पेस है तो उसको मर्ज करके, कोलैप्स करके एक एक व्हाइट स्पेस को कंसीडर करता है, एक स्पेस बना देता है। अभी यहाँ पे दो लाइन है, इतने व्हाइट स्पेसेस है, लेकिन ये इसको कोलैप्स करके कितना बना देगा? एक स्पेस बना सिंगल देगा। वर्ड स्पेस बना। ठीक है, आउटपुट देखते हैं, सेम आउटपुट। समझ गया सर। क्या सर कहते हैं हमें इसको? वैस इस प्रॉपर्टी को कोलैप्सिंग व्हाइट स्पेस पर इंटरव्यू एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्वेश्चन आएगा। हटाना। हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कोलैप्सिंग व्हाइट स्पेस? बता पाओगे? यस सर, अब बता देंगे यार हम। सब बता देगा? यस सर, किसी बता को? देंगे। यस सर, अब एग्जांपल दे के बता सकते हैं। हाँ, ये एग्जांपल हो गया। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन सो फार? एनीबॉडी? सर हमें सर ये जस्ट पैराग्राफ वाला लास्ट नहीं समझ आया। ये लास्ट, देयर इज अ टर्म व्हिच सेज कोलैप्सिंग व्हाइट स्पेस, ठीक है। सो हमने क्या लिखा है? हमने लिखा दिस, फिर इतना स्पेस बनाया, राइट? यस बिटवीन सर। में इज, दिस इज के बिटवीन में इतना स्पेस रखा, तो कितने व्हाइट स्पेसेस हैं? ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
लेकिन ये क्या करेगा, इसको 8 स्पेस नहीं कंसिडर करके इसको 1 स्पेस ही कंसिडर करेगा। इवन अगर ये नेक्स्ट लाइन में है, इतने स्पेसेस है तो भी 1 स्पेस कंसिडर करेगा। इवन ये नेक्स्ट लाइन के यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, द आउटपुट विल बी सेम एज दिस, क्योंकि ये सारे व्हाइट स्पेसेस कोलैप्स होके 1 व्हाइट स्पेस में आ जाएंगे। ओके सर, अंडरस्टूड। क्लियर है? सर हमें अगर जस्ट ऐसे ही प्रिंट कराना हो तो? प्री टैग यूज करते हैं, वी विल कम टू दैट। ओके ओके। ठीक है, प्री में अगर आप इसको प्री टैग कर दोगे तो आप जैसे लिखे रहोगे वो वैसे ही आएगा। Yeah. समझ रहे? But we are talking about the p tag now. So it's a term collapsing white spaces. Clear है? Any doubt, any question from anybody? नो सर। All good? यस सर, ऑल गुड। Non-technical backgrounds? यस सर, समझ में आ गया सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अभी पूछना है तो पूछो, 10 दिन बाद नहीं पूछना, ओके सर। क्योंकि बाकी क्लासेस इसके बेस पे हैं। ठीक है, एक टॉपिक के बेस पे ही दूसरा टॉपिक है। ठीक है? सबको क्लियर है? व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक टाइप एचटीएमएल? वी विल टॉक अबाउट इट। हम सिमेंटिक एचटीएमएल जब पढ़ेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट द डॉक टाइप। अभी डॉक टाइप नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स नाउ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज इट कैन बी। ठीक है शिवा? और बाकी आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, सब मैंने दिया है, एक्स्ट्रा टैग्स भी दिए हैं बहुत सारे। ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप इसको ओपन बेसिक्स के लिए। ठीक है? कहाँ पे शेयर करेंगे सर ये डॉक्यूमेंट? स्लैक में शेयर करूंगा। आज का कोड भी शेयर कर दूंगा और डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा। हर दिन का कोड मैं हर दिन स्लैक पे शेयर कर दूंगा, वो आपके रेफरेंस के लिए रहेगा। Sir, where can we find the recordings? We'll get the recordings over a YouTube channel which will be private, accessible to your email ID only. You will get the permission to access and you can access. Okay, okay, sure. And you skip the class, you won't get the access to that day recording. Okay. सर ये बॉयलर प्लेट HTML जो स्ट्रक्चर है, बॉयलर प्लेट से +1 से हो जाता है ना? बॉयलर प्लेट आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी आप हैंड टू हैंड यूज करो। ठीक है? बॉयलर प्लेट लास्ट में यूज करेंगे। बॉयलर प्लेट क्या है? आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको पता यस होना चाहिए ना। अभी आपने यस यस बॉयलर यस। प्लेट यूज किया, सो मैंने बॉयलर प्लेट कोड्स इसमें शेयर किए हैं ऑलरेडी। ठीक है? अभी जैसे यहाँ पे आओगे, सो यहाँ पे मैंने एडवांस एचटीएमएल में बॉयलर यस यस प्लेट यस ये सारा बॉयलर प्लेट। ठीक है? लेकिन हम यस। अभी इसके बारे में नहीं बात करें। जब तक हम सारी चीजें समझ नहीं लेते तब तक हम बॉयलर प्लेट नहीं यूज करेंगे। ठीक है सर, ओके। पहले रॉ समझ लेते हैं, फिर बॉयल करेंगे, फिर बॉयलर प्लेट यूज करेंगे। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब है कुछ और टैग्स है, शायद आज नहीं कवर होंगे, लेकिन 2-3 टैग्स मैं बात करूंगा ताकि एटलीस्ट आपको विथ का गेम समझ में आए। ठीक है? सो आई हैव ग्रुप्ड other tags to style the content. It's a group. ठीक है? हेलो? Yes, sir. It's a group. मैंने सारे टैग्स को मिला के ग्रुप बनाया। सो स्पैन टैग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। So this is inline tag. It takes Inline the tag. width of the content. जितना content है उतना ही width होता है। Exactly. So the output will be same as
p tag. ठीक है, so Yes, sir. this is Output. a span tag. ठीक है, now what's the default property of the span tag? It takes the content width. full width नहीं लेता, जितना कंटेंट है उतना ही width रहेगा. आप देख रहे हो ये ब्लू पार्ट? हेलो, Yes, sir. सबको दिख रहा है? तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है? width is Of the content. content width. ठीक है, width no margin no padding. पेडिंग बाय डिफॉल्ट इसमें कोई मार्जिन कोई पैडिंग नहीं होती. डिफॉल्ट विथ कितना होता है? कंटेंट विथ. जितना आपका कंटेंट है उतनी ही इसके विथ है. सो अगर इफ वी राइट टू स्पैन टैग्स साइड बाय साइड, व्हाट विल हैपन? सेम लाइन में आएंगे सर. सेम लाइन में है, ये सेम लाइन में है, राइट? क्यों? क्योंकि पहला वाला टैग इतना स्पेस लिया है, दूसरा वाला टैग इतना स्पेस ले रहा है, बाकी स्पेस अभी खाली खाली है. है. क्लियर है सबको? यस एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No, sir. No, sir. ऑल गुड? यस सर Yes, sir. ठीक है. बी टैग, दिस इज बोल्ड है तो बी सर टैग. कंटेंट को बोल्ड में डिस्प्ले करता है. we use this to hold the content. ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा that will be styled as bold. So इसीलिए मैंने ये ग्रुप है बनाया, other tags to style the content. So bold B stands for the bold, to bold the text. Hi, Bipin. Hi. But these tags are now deprecated, if I'm not wrong. Instead of that, we are using different tag. Like for B, we use a strong tag. Strong tag. No, I'm coming to that. ठीक है. There is a difference. अभी जो डेप्रिकेटेड हो भी गया है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आता है. कल कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ही दिया कि बी टैग क्या है या फिर स्ट्रॉन्ग टैग क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड बी? एनीबॉडी? Yes, sir. B tag marks content bold, and strong text defines some important text or paragraph to developer and browser. ठीक है. बी टैग अगर एग्जैक्टली व्हाट यू सेड इज करेक्ट. ठीक है. To simplify, B tag, we use B tag to make the text visually bold and strong tag to semantically bold, isn't it? सर सेमेंटिकली से क्या समझे? अभी किसने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम? आनंद त्रिपाठी सर. आनंद. Yes, कम अगेन, फिर से बताओ. इस सर मैंने कहा सर कि जो है बी टैग सर, बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सर दोनों ही सर बोल्ड में लाते हैं. बस सर बोल रहे. स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट जो है वो हाँ, ब्राउजर और डेवलपर को ये बताता है कि सर ये लाइन या फिर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है. ठीक है. That is called semantically bold. So classic HTML, normal HTML and semantic HTML. ठीक है. वो Yes. उस इम्पोर्टेंस को बताता है. So it's not a deprecated, संदीप. ठीक है. अभी क्या है, बी टैग नहीं यूज होता है. एक्चुअली ये यूज होता है. कहाँ यूज होता है वो भी मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा. ठीक है. हेलो. Sure, sure. Okay. हाँ, ये आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि Yes, कहाँ sir. यूज होता है. स्ट्रॉन्ग टैग क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज बोल्ड? सर विजुअल अपीयरेंस विल बी सेम, इंपॉर्टेंस विल बी डिफरेंस. ठीक है. व्हाट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर?
content width, no margin, no padding. ये एक ही लाइन में आएगा. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So another tag is I. We use I for Italics. italics. This is I tag. Same behavior. And another tag is EM. What is EM? Emphasize. Emphasize. Same. The output, the visual output will be the same as the I. Both will be italic, but the difference will be same. जो अभी आनंद त्रिपाठी ने explain किया, that is the same thing. Visually italic and semantically italic. ठीक है? Yes, sir. We have del. This is del tag. What is del tag? Del tag marks a line between the contact. Strike through to the text. है ना? Strike through. Yes, sir. del के बाद क्या है? INS. This is INS tag. अभी सबके डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है. डिफॉल्ट विथ, कंटेंट विथ, नो मार्जिन, नो पैडिंग. INS makes the underline and so the U makes the underline. ठीक है? हेलो. Yes, sir. हाँ. INS and U के बाद क्या है? Mark and insert. Insert we already did. INS. So next is mark. What it does? टेक्स्ट को मार्क करता है, जैसे हम मार्कर से मार्क करते हैं, हाईलाइट करते हैं, राइट? Oh, sir, can we Yes, change the sir. color of the mark, sir? अबे ये मार्क का तो यही कलर है ना, इसी कलर से Sir, मार्क करते हैं ना. हाईलाइटर तो यही होता है ना. चेंज कर सकते हैं, सर बट बस वही जाना ऑप्शन है कि नहीं हम लोग के पास? ऑप्शन तो CSS में है ही, सब कुछ कर सकते हैं, बट अभी CSS के पार्ट में हम गए नहीं है. अभी हम मार्क टैग का जो अभी टैग्स के हम डिफॉल्ट बिहेवियर समझ रहे हैं. हम सब कुछ कर सकते हैं. H1 को सबसे छोटा बना सकते हैं, H6 को सबसे बड़ा बना सकते हैं, राइट? Yes, CSS sir. से. अभी हम डिफॉल्ट बिहेवियर समझते हैं. अभी डिफॉल्ट ये क्या करता है वो नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, है ना? Yes, sir. मार्क टैग हो गया. एंड अनदर इज सब एंड सुप. सो व्हाट इज सब एंड सुप? Sir, Subscript subscripts and and superscript. superscripts, sir. या सो 2 to the power 2 and 2 under power 2, right? What do we call? इसको क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट को. and this is superscript, right? सब and sup दोनों का बिहेवियर सेम. विदाउट कोई क्वेश्चन है अभी तक No, sir. किसी को? No, sir. ऑल गुड. सर HR टैग क्या यूज? अच्छा टैग आएगा अभी, उसका अलग ग्रुप बनाया है मैंने. व्हाट डू वी कॉल दैट ग्रुप? void elements. ये भी एलिमेंट है, ठीक है? इसके अंदर कंटेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक एलिमेंट रहेगा. व्हाट डू वी कॉल? Void elements. void elements. और सेल्फ क्लोज्ड टैग्स. तो सेल्फ क्लोज्ड टैग्स आपको जानने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट remember it as a void element. And what are the void elements? So first is the BR. You write it like this.
or you write it like this. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. How, why do we to break the So to go lines, to next line. to break the line. So let's say this is a paragraph and this was the output. You put the BR tag before the paragraph and the paragraph goes to next line. Okay. Another one is HR. What is HR? You write it like this or this. Line draw कर देता है. Right, to create an horizontal line. ठीक है, एक लाइन बना देगा. क्लियर है? Yes, sir. दो और वाइड एलिमेंट्स हैं, image and link. You write it like this, image or that. Why do we use image? We'll add some image. To add some image into the document. And link has a specific purpose. We will talk about it in upcoming classes. अभी आप बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, कुछ है? No, no. But anybody? No, sir, no question. No, sir. No, sir. So I will go by the name. Tamanna says no. Subalasmi, Siva, Riya, Umar. No, sir. Okay. Irfan, Manazir, Gaurav, Dheeraj. No, sir. No, Okay, sir. Sandeep already said no. Praveen already said no. Abhishek knows everything. And who left? Bipul, Daniel, Gaurav. No, sir, it's all right. No, sir. Okay. Who left? Everybody got covered, right? So all clear to everybody, right? Yes, sir. Yes, sir, Good. clear. Now it's time to wrap up for today. Okay. With Assignment. Homework. an assignment. ठीक है? Yes, sir. बहुत easy assignment है. I will write the assignment here. ठीक है? Yes, sir. What is the assignment? Find the default font size. ठीक है? Font family. Margin, padding of all heading tags and paragraph tag. ठीक है? Okay, sir. Everybody will submit the font size, the default font size for the heading tag, all the heading tags, and the p tag, default font family, default margin, as well as default padding. Clear है? Hello. Hello, sir. Clear है सबको? Yes, sir, Assignment? clear है. हाँ. Sir, Assignment submit process. हाँ? Assignment submit platform. Which platform? आप टेक्स्ट में लिख दो, नो टेक्स्ट फाइल में, और Slack पे पोस्ट कर दो. Yes, please, could you please post assignment over Slack? I will. Yeah, please. So Yeah, that will be Slack helpful. में
स्लैक में जो भी पोस्ट करेगा यू विल डायरेक्टली डीएम मी, ठीक है? डायरेक्ट मैसेज से पोस्ट करोगे, नहीं तो आपका असाइनमेंट कॉपी हो जाएगा। ओके ओके। सो एवरीबॉडी विल डीएम मी, ठीक है? The assignment. Sir, can So, you show me once what the assignment? yeah, of course. I will share this file, don't worry. Let me Okay. share this file now only. So I will just share these two files over Slack. So ये एक लिंक हो गया to download the ID. ये this is the document for your reference. अभी आप इसको बेसिक HTML जानने के लिए देख सकते हो. But we will talk about most of the parts, ठीक है? We will talk about all these things, ठीक है? बट यहाँ में थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ. And this was our code for today. ये Okay. code था, and within this code you have the assignment, the last line. It's commented. Font size, font family. Okay. सर मुझे असाइनमेंट नहीं समझ आया कि करना कैसे है। आपको पता करना है ये जो H1 टैग है ना, इसके जी सर। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, राइट? जी सर। लेकिन ये कितनी बड़ी है, इसका कोई एग्जैक्ट साइज तो होगा। जी सर। सो वो साइज आपको पता करना है। H1 का एग्जैक्ट साइज क्या है, H2 का एग्जैक्ट साइज क्या है, ठीक है? फॉन्ट साइज क्या है, H3 का क्या है, H4 का क्या है, H5 का क्या है, H6 क्या है, और P टैग का क्या है, डिफॉल्ट मार्जिन कितना लेता है और डिफॉल्ट पैडिंग कितना लेता है। सर और जो फैमिली वाला आपने बताया था, फॉन्ट फैमिली कौन सा, क्या फॉन्ट का नाम क्या है? ठीक है, आप ये कहीं से भी मैनेज करो, किसी से पूछो, गूगल करो, जो भी करो, बस मुझे चाहिए कि आपने किया है, ओके सर। क्योंकि आज ये करना जरूरी है। सबको पता है कि छह छह टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है? आपको सब जगह मिलेगा, कहीं भी पढ़ोगे सारे टीचर्स बताएंगे, यूट्यूब पे पढ़ो, जहां भी पढ़ो। क्या साइज है ये कोई नहीं बताएगा। कल को इंटरव्यूअर, अगर मेरे जैसा इंटरव्यूअर रहेगा, तो पहले ही पूछेगा कि कितने टाइप्स के हेडिंग टैग्स है, 6 टाइप के, H4 का डिफॉल्ट साइज बताओ, है ना? जी सर। और आपको तो ये जानना भी जरूरी है ना, ये आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ तो होगा इसकी डिफॉल्ट साइज। जी सर। ठीक है सर गाइस? जैसे आपने एग्जांपल दिया था 1365 वैसे वाला। वो तो विथ हो गए ना। H1 का एक फॉन्ट साइज है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसका इसका ये फॉन्ट साइज है ना 16.5। यस सर। ये सेलेक्ट किया हमने, 16.5 है, ये कितना है, 10.5 है। ये फॉन्ट नेम है, ये फॉन्ट नेम है लाटो, है ना? राइट? यस। इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज क्या है, 18 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली क्या है, एरियल, करेक्ट? सो ये जो आप देख रहे हो ये बड़ा है, लेकिन ये कितना बड़ा है, 18 पिक्सल। जी सर। जिसकी कुछ स्पेसिफिक साइज तो है, यस सर। इसकी भी होगी। यस सर। अब ये आप मैप कर नाप के बताओ, पता करके बताओ, जैसे भी बताओ, मंडे को मुझे चाहिए। ओके सर। सर क्लियर मंडे है? को चाहिए। यस सर। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है ना? हाँ, सैटरडे संडे ऑफ है ना? वीकेंड्स पे ऑफ है ना? यस सर। ओह, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, शिवा का हो भी गया ऑलरेडी, ठीक है? क्या बात, कहीं से चेप दिया शिवा ने? ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। सर असाइनमेंट और जल्दी अपलोड कर सकते हैं। भेजते रहो, जैसे जैसे शिवा ने अभी भेज दिया, आपका बन गया, आपने भेज दिया।
है ना? शिवा, Yes, sir. what is the exact size of H3 tag? Sir? H3, what is the exact font size? You want to know exact font size? I think it should be what's the difference like between, sir? So I did No, not. it's not the between. I want the exact. Okay. Okay, देखो, ठीक है? Okay. Who is from Dhanbad? Raiganj was somebody was from Raiganj, right? Yes, sir. Who is from Raiganj? Umar sir. Umar Farooq, sir. Umar Farooq. Bengali आती है? Yes, sir. चलो ठीक है चाहिए। Okay, sir. ठीक है, ठीक। ठीक है, अभी मुझे पता होना चाहिए किसको किसको बंगाली आती है। कल को मैं बात किया तो मैं क्या बात कर रहा हूँ ये आपको पता चलेगा ना। ठीक है, सर। मुझे केयरफुल रहना Hi, पड़ेगा ना आसपास अगर मैं बात कर रहा हूँ। hi Bipin. Hi. I have shared you something in DM. So, are you asking for the same what I have shared? Right. Okay. But you sent in EM. I don't want it to EM. Okay, I so want it in pixel. okay, fine, cool. Pixel. Everybody Actually, make a note. 22, 24 pixels, sir. 22 to 24. Exact. What is the exact size of H3? You don't need to rush. You have 2 days to find out. Okay. I know. मुझे पता है। आपको पता करना है कि क्या है, ठीक है? Okay. खुद के लिए आपको अपने लिए पता करना है कि क्या है। Okay. You must know. 26. No, 26 नहीं है H3 का। चलो भाई, H3 का what is the size in EM, संदीप? 18.72 pixels 18.72 पिक्सल। चलो भाई, for H3. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम 18.72 पिक्सल for H3. EM में बताओ H4 का। H4 का 1 EM 1 EM लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट इज 1 EM? हाउ मेनी पिक्सल्स? I don't know this unit, sir. अरे ये यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। Oh, सारा गेम तो पिक्सल का ही है और विथ का है। फिर अभी आप तो बूटस्ट्रैप भी कर चुके हो। उसके तो बस सर क्लासेस लगाने थे। CSS नहीं किया आपने? CSS इतना डीप में नहीं है। कुछ तो किए होगे ना CSS में, मार्जिन पैडिंग तो किया होगा। यस सर, वो तो या पिक्सेल्स में। हाँ तो पिक्सल में आपने बनाया ना कुछ भी, यस सर, CSS यूज किया हो तो पिक्सल यूज। सो 1 EM में कितने पिक्सल रहते हैं? सर EM याद नहीं है। Anybody? sorry, come again. 16 pixel 16 pixel. 1 EM is 16 pixel 16 pixel. 12 PT and 1 REM. यही रिलेशन है, ठीक है? सर EM और REM का क्या फुल फॉर्म है? रूट EM होता है REM का। वी विल टॉक अबाउट इट जब CSS करेंगे तो इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। एक्चुअली EM 16 पिक्सल है, REM बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है अनटिल अनलेस आपने उसको डिफाइन किया है, ठीक है? तो अगर 1 REM इक्वल टू अगर आपने 5 पिक्सल पहले डिफाइन करके रखा है तो 2 REM कितना हो जाएगा? 10 पिक्सल हो जाएगा, राइट? और बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 16। तो 2 REM कितना हो जाएगा? 32 32। तो डिफरेंस यही है कि EM पहले से डिफाइंड है कि 16 पिक्सल है, REM को आप खुद डिफाइन कर सकते हो। सर ये क्या होता है?
सर जैसे EM का यूनिटरी क्या मेथड फुल होता है। फॉर्म? हाँ, सर EM का जैसे पूरा नाम क्या? ईएम का तो मैं खुद भी भूल गया हूँ यार, गूगल करते हैं, रुको। ईएम फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मेल आ रहा है, कुछ भी CSS में देखते हैं। EM is the unit of measurement which indicates, ये तो ठीक ही है। EM का फुल फॉर्म आप पता करके बताना मंडे को। सर मी एवरीबॉडी, सर सबको ये पता क्या होना चाहिए। सर ये हाँ, क्या है? यूनिटरी, यूनिट मेथड कहते हैं हम इसको। जो भी हम अभी ये what we talked, that heading tag took, what is the size of the heading tag? 1365 ना, 1350, 1350 पिक्सल। एक पिक्सल कितना होता है? 1 डॉट इज 1 पिक्सल, ठीक है। वट एवर यू सी ऑन दिस स्क्रीन, ये जो डॉट दिख रहा है बेसिक में, HTML बेसिक आई के ऊपर जो डॉट दिख रहा है दैट इज 1 पिक्सल, ठीक है। सर यस सर। सो ये जो है, ये आई के ऊपर जो डॉट दिख रहा है दैट इज 1 पिक्सल हाइट एंड 1 पिक्सल विड्थ, ऐसे होता है। सो सारे पिक्सल्स को मिला के सब बनता है। अभी वो सेम मेजरमेंट है, मीटर और किलोमीटर का, या फिर ग्राम और किलोग्राम का हिसाब है। तो 16 पिक्सल इक्वल टू 1 EM इक्वल टू 12 PT इक्वल टू 1 REM। PT used for PT points. So earlier दो टाइप के ब्राउजर होते थे, एक प्लेन ब्राउजर होता था, एक वेबकिट ब्राउजर होता था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? पॉइंट्स, वेबकिट ब्राउजर में पॉइंट सपोर्ट करता था। आज के डेट में सारे ब्राउजर ही वेबकिट ब्राउजर हैं, ठीक है। पहले हम अलग अलग CSS लिखते थे, मोजिला के लिए ये हाइफन मोस करके लिखते थे, वेबकिट के लिए ऐसे वेबकिट लिखते थे, ओपेरा के लिए ऐसे ओपेरा लिखते थे, ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए आई लिख ऐसे। अभी क्या है, सारे ब्राउजर ही वेबकिट ब्राउजर है। इट्स जस्ट अ रेफरेंस कि 16 पिक्सल इक्वल टू 12 PT। আসছে আসছে ফোন করে करो, ठीक है। यस सर। चलो आज का क्लास ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करना था क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? यस सर। हाउ Yes, वाज sir. इट? Good, sir. अच्छा था सर, गुड सर। Yes, sir. गुड, इंटरेस्टिंग? Learned a lot, sir. यस सर। You learned a lot, that's a good thing। अभी सबको समझ में आया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। And someone missed the class, what was her name? Ritu. Pritu missed the class because of audio issues, but she will find the recording, okay? So we will see each other Monday. Till then, you revise this, you go through this, do the assignment, and you know, हेलो खुद से सर। करो आप, खुद से करो आप, कुछ बनाओ इसी में, ABCD लिखो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। हेलो सर। हाँ, तो कितने देर में रिकॉर्डिंग मिल जाए, आएगा लिंक रिकॉर्डिंग का? अरे ये तो लाइफ लॉन्ग याद होना चाहिए यार, आपको क्या रिकॉर्डिंग की जरूरत है बताओ। इस रिवाइज के लिए थोड़ा। रिवाइज के लिए मिल जाएगा आपको, as soon as possible the team will upload the recording, you will get the access, ठीक है। ठीक है सर। आज के तो लिए थोड़ा बहुत कम्युनिटी हिंदी मिक्स कम्युनिटी हुआ है। ठीक है सर।
Come again, Umar? सर बोल रहा हूँ क्या सर, जो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म में स्लैक सर? Slack. सर स्लैक का लिंक प्लेटफॉर्म का Slack का लिंक आपको मिल गया होगा। आप Slack पे नहीं हो? हम स्लैक पे नहीं है सर। एक मिनट। ओके, ठीक है। You ask Manjit sir or the team to add you over Slack, ठीक है? Yes, Oh, sir. you are there. You are there. UF 00786. This one is you, right? Yes, sir. UF 00786 @gmail.com. Yes, sir. Yes, sir. I will write hi to you, so you will get an email notification. Or Okay, Slack you can open. Okay, sir. Okay, sir. Everybody is there, ठीक है? Okay, sir. So, well, we will wrap up today with this. And thank you guys. Thanks for your time. Yeah, it was Thank you. nice you. to me as well. Yeah. Thanks. Thanks for your Yeah. participations. Thanks Happy for your weekend. time. Thank you, Happy sir. weekend. Thank Yeah. you. Bye-bye. Good night. Bye, sir. Good night. Good night. Good night, See you on sir. Monday. Good night. Good night, Good sir. night. Good night. Good night. Good night, all of you. Good night, guys. Bye-bye. Good night. Good night. हेलो 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 जी बोलो। हाँ